Hello students, welcome to Mitu Maths classes. Your question is, find the interval of concavity and convexity and the points of inflections for this function. Now first of all you have to find out the point intervals in which your function is concave upward and in which your function is convex upward. Let us take the definitions of concavity and convexity first. कॉन्केव अपवर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? आपका फंक्शन fx इज कॉन्केव अपवर्ड इज कॉन्केव अपवर्ड if your second derivative is positive. So the interval in which your second derivative is positive, your function will be concave upward. And what is the definition of convex upward? Your function fx is convex upward if your second derivative is negative. तो जहां आपका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उस इंटरवल में योर फंक्शन इज कॉन्वेक्स अपवर्ड. कॉन्केव अपवर्ड मतलब इस तरह की आपकी वो आ जाएगा, कर्व आ जाएगा. एंड कॉन्वेक्स अपवर्ड इज लाइक दिस. नाउ यू हैव टू ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ inflections? Now the point of inflections are those points where your second derivative changes sign. The points where second derivative of the function changes its sign, and they are the points of inflections. Now let us discuss our function. Our function is fx is equals to x plus sin x. To finding the interval in which your function is concave upward, you have to first find second derivative function. Your first derivative of this function is 1 plus cos x, and the second derivative of this function will be minus sin x. To find out the interval in which your function is concave upward, you have to check where your second derivative is positive. So let your second derivative is positive when minus sin x is positive. That implies sin x is negative. और sin x नेगेटिव कब होता है आपका फंक्शन? अभी आप छोटे से इंटरवल में लो. वैसे तो आपका sin x फंक्शन जो है वो काफ़ी वो है, लेकिन आप अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर देखते हैं तो आपका डेरिवेटिव sin x इज नेगेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई. Now the domain of our function is the whole real line. तो आप पूरे रियल लाइन में देखेंगे कि कहाँ आपका फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड है. ऑन जनरलाइजिंग योर आंसर, आप अपने आंसर को आप जनरलाइज करेंगे, देन यू विल गेट x बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय पाई टू 2n plus 2 pi, where n belongs to integers. ठीक है. So these are the intervals in which your function is concave upward. Is the interval in which fx is concave upward. Now we have to also find the intervals in which your function is concave downward, and for concave downward you have to check where your derivative function, second derivative function is negative. So second derivative function is negative when
your minus second derivative function is minus sin x. Minus sin x is negative. That implies sin x is positive. और sin x आपका पॉजिटिव कब होता है? When x lies between 0 to pi. But now you are going to generalize your answer. On generalizing, your answer, we will get x belongs to 2n pi to 2n plus 1 pi, where n belongs to integers, and this is the interval in which fx is convex upward. Now you have to also find the point of inflections, and for the point of inflections you are going to try search where your second derivative is positive. They are the where second derivative is 0. They can be the tentative point of inflections. So put your second derivative function is equals to 0. So minus sin x is 0. So x will come out n pi, where n belongs to integers. But ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे point of inflections हो. तो we are going to check कि वो इन points पे अपना sign change कर रहा है या नहीं कर रहा. Yes, when x is, अब देखो आपका हर एक आपका जो odd multiples of pi और even multiples of pi, इन सभी points पे your second derivative changes its sign. तो पहले कॉन्केव अपवर्ड है 0 पाई, इन सभी पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, अपना कर्वेचर चेंज हो रहा है इनका. इन सभी पॉइंट्स पर योर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर अपना योर फंक्शन एफ एक्स चेंजेस द कर्वेचर. सो दे आर all the points of inflection of fx.